Hello students, in previous video we have completed unit 14 and now today we will start the new unit, that is unit 15, temperature. Now first of all we will try to understand what is temperature. So here, Nehal, finish your milk before going to play. So you can see here a glass of milk and oh, the milk is very hot. She said, oh, the milk is very hot. I cannot drink it. So do you know how much hot the milk is? No. Now Nehal, get me a glass of water. Here grandma, please have it. Oh, this water is very cold. I cannot drink this. Do you know how much cold is the water is? Now, to find how much hot or cold an object or body is, we need a measurement. So, how much hot is the milk and how much cold is the water? So, to find the hotness or the coldness of the object, we need a measurement, right? हमें measure करना पड़ेगा उसकी hotness और coldness को. So the temperature is the measure. Temperature is the measure used to check hotness or coldness of a body. So temperature क्या है? Measure है hotness और coldness किसी body की check करने का, right? कोई भी बॉडी है उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस को जो चेक करते हैं, चेक करने के लिए जो मेजर करते हैं हम, वो है टेम्परेचर. सो नाउ द इंस्ट्रूमेंट, you know, the instrument used to measure temperature of a body is called thermometer, and I hope that all of you must have seen the thermometer. This is a thermometer, and nowadays we can also have a digital thermometer, right? वो थोड़ा अलग होता है, उसमें automatically आपकी जो temperature है वो आ जाता है. So nowadays many doctors use that thermometer. So look at this thermometer carefully. You can see here the thermometer, and most of you have seen this thermometer also. The unit used to measure the temperature is called degree. So जो temperature को measure करने के लिए unit use होती है, that is called degree. और यही डिग्री हमने पहले भी किया है, जब हम एंगल्स को मेजर करते हैं, तो हमने 4th क्लास में स्टडी किया है कि एंगल्स को मेजर करने के लिए उसके लिए भी हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? डिग्री, राइट? सो यहाँ पर टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी कौन सी यूनिट यूज होती है? हमारी डिग्री, राइट? नाउ लुक एट द thermometers given below and note the scales given on each. So you can see here there are 2 thermometers and see the units, or you can say see the scales on each. 2 thermometers are there. Here which scale is used? Celsius scale, and here Fahrenheit scale is used, right? दोनों में क्या है? Difference है. This is Celsius scale and this is the Fahrenheit scale. So there are 2 scales. How many scales are there? 2 scales to measure the temperature. So if we talk about the Celsius scale, so the freezing point of water, freezing point means वो टेम्परेचर जिस पे जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है और आइस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट. सो इन सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. सो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है एंड इट कैन गेट कन्वर्ट्स इनटू आइस, राइट? एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स टेम्परेचर जिस पे हमारा वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर जो
वाटर का होता है. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ water. Now if we talk about the Fahrenheit scale, the freezing point of water, freezing point again जहां पर आपका वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है जिस टेम्परेचर में. So freezing point of water is 32 degree Fahrenheit. So you can see here 32 degree Fahrenheit is the temperature at which water freezes. So you can say जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके इक्विवेलेंट है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या होता है, एक ही होगा वाटर का. ऐसे तो नहीं है कि अलग अलग टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज कर रहा है. सो फ्रीजिंग पॉइंट इज सेम. तो अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट in Celsius scale, the freezing point of water is 0 degree Celsius. So both are equal. And the boiling point of water is 212 degree Fahrenheit. So again boiling point तो सेम ही होगा वाटर का. अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूं तो मेरा कितना है बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. So again 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit are equal, or you can say same temperature. So these are about the two scales. There are two scales in which we can measure the temperatures, that is Celsius scale and Fahrenheit scale. Now do you know the Fahrenheit scale is named after a German scientist G. Fahrenheit, and the Celsius scale is named after a Swedish astronomer A. Celsius. And now see, the doctor is using a thermometer. So you know, जब हम बीमार होते हैं या कोई भी बीमार होता है तो टेम्परेचर चेक करने के लिए what we use is thermometer. यहाँ पर डॉक्टर भी आपका इस पिक्चर में थर्मामीटर यूज कर रहा है टेम्परेचर चेक करने के लिए ऑफ हिज पेशेंट. पेशेंट का टेम्परेचर चेक करने के लिए डॉक्टर क्या यूज कर रहा है? थर्मोमीटर. एंड द डॉक्टर्स थर्मोमीटर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर. डॉक्टर के थर्मामीटर को क्या बोलते हैं हम? क्लिनिकल थर्मामीटर. एंड द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी एडल्ट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए. द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी एडल्ट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस. Both the temperature are same, only the difference is in the scale. यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट स्केल में है और यहाँ पर ये सेल्सियस स्केल में है, बट बोथ ऑफ देम आर इक्वल, दोनों ही सेम है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. अगर आपको बॉडी टेम्परेचर बोलता है कि कई बार हम बोलते हैं कि फीवर हो गया 102 डिग्री, तो वो फ़ारेनहाइट स्केल की बात कर रहा है. बिकॉज 102 डिग्री अगर सेल्सियस बोलते तो आप समझ सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है. तो बॉयल्ड वाटर कितना हॉट होता है यू नो. अगर हम उसमें अपनी फिंगर डिप करें तो हमारी फिंगर जल जाएगी. सो वो जो 102 डिग्री फीवर है बोलते हैं तो दैट मीन्स इट इज डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉट इन सेल्सियस. सो द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी एडल्ट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस. So what we have learned, that there are two types of scales, Celsius scale and Fahrenheit scale, and the instrument that is used to measure temperature of a body is called thermometer, right? And the thermometer which is used by the doctor is called clinical thermometer, right? Now we have worksheet number 1. What is the measure of hotness and coldness of a body called? So जो hotness and coldness of a body को जो हम measure करते हैं that is called temperature. That is called temperature, right? Which is, and this is the name of the unit also. So what is temperature? Temperature is the measure of hotness or coldness of a body.
टेम्परेचर क्या है? मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, राइट. नेक्स्ट इज नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. वेरी इजी क्वेश्चन, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए? दैट इज थर्मोमीटर. Thermometer, right? And what is the name of the thermometer used by a doctor? डॉक्टर कौन सा थर्मामीटर यूज करता है? दैट इज क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर. Clinical thermometer, right? Next is name the two scales used for measuring temperature. So we have learned about two scales, that is Celsius scale, and other one is Fahrenheit scale. Fahrenheit scale, right? So these are the two scales that are used for measuring temperatures. Now, what is the freezing point and the boiling point of water in the Celsius scale? So, read the question carefully. कौन से स्केल में आपका boiling and freezing point water का पूछा गया है? So, यहाँ पर कौन से स्केल में बताना है हमने? Celsius स्केल में. So, the freezing point of water is equal to 0 degree Celsius, because we are talking about which scale? Celsius scale. And boiling point, here boiling point is equal to 100 degree Celsius, right? 100 degree Celsius is the boiling point of water. यहाँ पर कौन सी स्केल यूज कर रहे हैं हम? सेल्सियस स्केल. एंड व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द फ़ारेनहाइट स्केल? फ़ारेनहाइट स्केल में हम कौन सा क्या होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड नोट दैट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर डिफरेंट. अलग अलग चीज का अलग अलग फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. सो हियर वी टॉक अबाउट द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ओनली. सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं हम. अब आप जितनी भी चीजें, अगर मिल्क की बात करेंगे उसका अलग होगा, अगर हम किसी और लिक्विड की बात करेंगे तो दैट इज डिफरेंट. तो हर एक चीज का अलग अलग फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो कीप इट इन माइंड. किसी और चीज का फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं है. ये सिर्फ किसका है? वाटर का है, राइट? सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो हियर वी आर talking about the Fahrenheit scale. And the boiling point of water, especially of water, is 212 degree Fahrenheit. So 0 degree Celsius and 32 degree Celsius Fahrenheit are same temperature. ये सिर्फ सेल्सियस में और ये फ़ारेनहाइट में. और here again 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit are same temperature. So this is about the temperature. Now we have conversions, which is the very important thing. Conversion means converting Celsius scale into Fahrenheit scale, and another is converting Fahrenheit scale into Celsius scale. So these are the two conversion which we have to do in this unit. So कैसे हम Celsius scale को Fahrenheit scale में convert करेंगे, and कैसे हम Fahrenheit scale को Celsius में करेंगे, that we will study in our next video. Thank you.